Hello students, today I am going to teach you some other things or basic things in your trigonometry. For example, look here, 0 degree, 90 degree, then 180 degree, 270 and then again 360 here, means complete round. Okay, if you have here some value or some value for any trigonometric ratio, then you will find here 90 minus theta, 90 minus theta, because you will get here the value always less than 90 degree. Then here 90 plus theta or 180 minus theta. In this quadrant you have 180 plus theta and 270 minus theta. In fourth quadrant you have 270 plus theta and then 360 minus theta. So this is first quadrant, this is the second, this is the third and this is the fourth quadrant here. But in your course you have only 90 minus theta. So how will you find here the value for 90 minus theta? Come on, look here, sine 90 minus theta, this is cos theta, then cos 90 minus theta, you have got sine theta, then sec 90 minus theta equal to cosec theta, then cosec 90 minus theta equal to sec theta, tan 90 minus theta equal to cot theta, and then cot theta, cot 90 minus theta equal to tan theta. First you have to learn these formulas, okay? Sin 90 minus theta cos, then cos 90 minus theta sin, and so on. And now with the help of these you can solve your textbook questions. How will you solve? Look here. Look here, your first question is sin 18 upon cos 72. Look here, dear friends, if you have here your question in division, multiplication, addition or subtraction, every time you will get here the sum of these two angles always 90 degree. So if you have to solve this question, you have to convert only one. Look here, out of numerator and denominator. For example, if in this question if you want to change here numerator, then you will change it sin 90 minus 7. Directly you can put here. If anybody asks you why you have put this, you should say, sir, sum of 18 and 72 equal to will be 90 degree. That is the reason if we need this, we have to subtract this number. If we need this, we have to subtract this number from 90. Okay, and then it will remain same. Only one thing, numerator or denominator, only one you have to change and other will remain same, cos 72. Okay, then formula sin 90 minus theta, that is cos theta, cos 72 and then cos 72. Cancel it and you have got here 1. Now next question, that is tan 48 degree, then tan 23 degree, then tan 42 degree and then tan 67 degree equal to 1. You have to prove it. Look here. Now in this question you have to make the pair so that you make the sum of two angles as 90 degree.
48 and 42. Sum of these two will be 90, and 23 plus 67, that will be 90. So you can put here this number as 1048 dot or into 1042, and then 1023 dot 1020 67. Now you have to change one of them. If we will change the first 90 minus 42, and then this number will remain same, 1042. Okay, and again here in this we change the second number, 1023, and then 1090 minus 23. But look here, you will change the first. So 1023, 10, look here, 90 minus 67, and then 1067. We have changed here one of these two. Come on. Then 1090 minus theta, or 1090 minus theta, that is cot theta. So cot 42 into 1042, 1042. Look here, and then 1090 minus theta, cot 67 dot 1067. Look here, put the value or formula for cot. You have 1 upon 1042 into 1042, and it out. Then cot, that is 1 upon 1067 into 1067. Cancel it, and you have got 1 into 1 equal to 1, that is RHS. So you have solved your this question. Go on. Next question. Look here, friend. Come on, set 4. Now you have to find here A. If sec 4A equal to cosec A minus 20, it is given here, and you have to find A. How will you get it? Come on. First, you have to change one of them. Sec, either sec into cosec or क्या cosec into sec. बच्चों, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा देखो क्या करना पड़ेगा कि if we want to change here sec, then you can put here sec. Look, sec. So you can put sec 4a. We are not changing here. We will change this number. So you will put here sec. Look here, 90 minus a minus 20. देखो ये थोड़ा टफ है, फिर भी मैंने इसको चेंज किया, जानबूझ के चेंज किया. इसको तो आसानी से कर सकते थे, cosec 90 minus 4a, लेकिन मैंने इसको चेंज नहीं किया बच्चों, ताकि तुम लोग अच्छे से इसको समझ लो. अब देखो बच्चों गौर से, और यहाँ पर हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना बच्चों, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, निकाल के sin 90 minus a cos 90 minus a. Okay, sin 90 minus, that is cos, and then this is sin. इसी प्रकार बच्चों मैंने बहुत इसकी जो वैल्यूज हैं वो मैंने तुम लोग बताए, and with the help of those values you can solve this. Come on. Next, sec 4a. Next step, sec 4a equal to, now look here, sec cancel. You can cancel it, sec, and then you have only 4a equal to, look here, 90 minus a minus 20. So you can put here what? Look, if you have cancelled it sec and sec, then you have 4a equal to 90 minus a and then plus 20. Come on, 4a
plus a equal to 90 and 20, you have got 110. Then 5/8 equal to 110. Then a equal to 110 upon 5, 522 degree. Okay. If you want to change this, again, I am telling you the second method. Look here, you can change it. Cosec 90 minus theta equal to sec theta. It means cosec 90 minus 4a equal to cosec a minus 20. Look here, cosec cancel. Then 90 minus 4a equal to a minus 20. Look here, minus 4a minus a equal to minus 20, then minus 90. Again, minus 5a equal to minus 110. Cancel it, a equal to 110 upon 5 and that is 22 डिग्री. बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, मैंने पहले इसको चेंज करके बताया और उसके बाद मैंने इसे चेंज करके. तो मैं इसलिए बताया बच्चों ताकि किसी भी प्रकार आपको कोई डाउट ना हो. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक हियर. बच्चों, एक चीज और ध्यान रहे कि आप लोगों को बच्चों मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज के भी मैंने देखो ये लिख लिए हैं क्वेश्चन सामने, और मेथड बच्चों इसमें तुम्हें अप्लाई करना है. अब मान लो बच्चों यहाँ पर sin 18 की जगह sin 48 दे दिया, sin 58 दे दिया, उससे कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता है. मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को बच्चों सोशल स्टडीज और साइंस जैसे आप नहीं कर सकते हैं. इसको तो आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा और मेथड अप्लाई करना सीखिए ताकि यदि उसी मेथड के दूसरे क्वेश्चन हो आप लोग बच्चों स्वयं उसको सॉल्व करें. इसके बाद आप लोगों की जो डिफिकल्टीज होती हैं, आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो उसका सॉल्यूशन तो अलग से करके बताते हैं. अब बच्चों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin b plus c upon 2 equal to cos a upon 2. You have to prove it. This is for triangle ABC. So you will take here in triangle ABC. Since you know angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Dear students, in trigonometry or when you have to prove anything, then your answer is just before you. यहाँ पर आंसर हमारे सामने होता है, इसलिए हमारे पास सोचने का मौका होता है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए. देखो बच्चों, यहाँ पर b plus c upon 2. देखो बच्चों, मेरे जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो टोटल इंग्लिश में हो गए. बाद में कुछ बच्चों का भी वो आए, मोबाइल आया कि पूरा कंप्लीट सर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अब देखो बच्चों मैं इसको मिक्स में बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे ढंग से समझें. sin b plus c upon 2 equal to cos a by 2. बच्चों, here you can see b plus c, so you will separate it and you have here angle b plus angle c equal to 180. Transpose it and you have got 180 minus angle a. But you need here d plus c upon 2. For this you have to divide both sides, or you can write here dividing both sides. Dividing both sides by 2, and then you have got angle b plus angle c upon 2 equal to 180 minus angle a upon 2. Now you need here angle b plus angle c upon 2. Put it again and then divide 180 by 2. You have got 90 here, and then angle a upon 2. Now you have got here b plus c upon 2 equal to 90 minus a by 2, but you need here sine and here cos. How will you get it? For this you have to put sine both sides. Sine b plus c upon 2, then sine 90 minus a upon 2. This is the rule of mathematics. By the same number you can multiply both sides, by the same number you can divide both sides, by same number you can add both sides, or you can subtract from both sides. Okay, look here. Then sine b plus c upon 2 equal to sine 90 minus theta, that is cos theta, means cos a by 2, and this is your answer, what you need or what you have to
find. Okay, so you have solved here your exercise perhaps 8.4, and then now we have to learn some identities, and with the help of these identities you can verify your next exercise, or you can prove the given identities in your textbook. For this we have main three trigonometric identities. First, sin square theta plus cos square theta equal to 1, and I will tell you how will we prove it. Okay, now if you need here sin square, then you can write 1 minus cos square theta, then cos square theta 1 minus sin square theta. Second identity, that is sec square theta minus tan square theta equal to 1. So you have sec square theta equal to 1 plus tan square theta, and then tan square theta equal to sec square theta minus 1. So this is the second identity here. And then third identity, that is cos square theta minus cot square theta equal to 1. Then you have cosec square theta equal to 1 plus cot square theta, and then cot square theta equal to, look here, cosec square theta minus 1. बच्चों समटाइम्स कभी कभार हो सकता है, बच्चों एक चीज़ का बस ध्यान रहे, वैसे तो होगा नहीं, मगर जब कभी कहीं से मान लो कोई डिजिट, कभी जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ अलग भी हो जाए बच्चों, तो मैथमेटिक्स है, इतना ज़्यादा इस पर तुम्हें मेथड पे ध्यान देना है। कई बार होता है मान लो लगातार पढ़ा रहे हैं, वीडियो बन रहा है, अब फिर रिटेक का तो कोई मौका होता नहीं है, अब लिख गया उसकी चिंता नहीं किया करो। अगर कभी धोखे से कोई डिजिट हो जाए तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना कि सर यहाँ डिजिट चेंज हो गई। बच्चों मैथमेटिक्स है, डिजिट्स अगर चेंज भी हो जाए तो आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है, आगे उसको बस मेथड देखिए, बट डिजिट अपने आप चेंज कर लो। टेक्स्ट बुक की है तो ठीक है, अगर अलग से होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब सुनिए, अब बच्चों ये आइडेंटिटीज के साथ तुम्हें कुछ फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे, जैसे साइन थीटा, this is the reciprocal of cosec, then cos, this is the reciprocal of sec, and then tan. Tan, that is sin upon cos, sin upon cos, and then cot, that is cos upon sin. Okay, so you have to learn it. Cos, sin equal to 1 upon cosec, so you can find here cosec 1 upon sin, and again sec theta equal to 1 upon cos. Okay, when you have to prove here some identities, then you need here these identities and you have to learn it. Okay बच्चों, अब इसके बाद हमें बच्चों प्रूव करना है, इनमें से बस आज मैं तुम्हें ये आइडेंटिटीज प्रूव कैसे करना है ये मैंने बता तो दिया बच्चों, बट यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ गौतम सर, सो इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू प्रूव these theorems. Okay, listen me, how will you prove it? Look here, for example, if I have to prove this sin square theta plus cos square theta equal to 1, and one identity here I have to prove, and then with the help of this you have to prove yourself. Okay, come on, sin square theta plus cos square theta equal to 1. For this we take a triangle, right angle triangle ABC, in which angle will be equal to 90 degree, and here we have theta. So it is clear, it will be this is the hypotenuse and this will be base. Okay, now and you have to prove it geometrically. So just first we have to write here given. What is given here? I have already told you that total trigonometry depends on a right angle triangle. Without the help of right angle triangle you can't prove anything in your trigonometry. So you have here a right angled triangle ABC. कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ गिवन है बच्चों, हमेशा अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप बताइए
ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ही उसका बेस है, क्योंकि जब आप बात करोगे P, B और H के विदाउट राइट ट्रायंगल इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन करे उसको आप जवाब दीजिए कि हाँ हमारे सब ने कहा है कि इट इज ओनली पॉसिबल इन राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज द रीजन हियर आई एम टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। देन टू प्रूव बच्चों क्या हमको चाहिए, मैं पूरी थ्योरम बेस पे कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज योर क्वेश्चन इज यू हैव टू प्रूव इट ज्योमेट्रिकली, और ज्योमेट्रिकली करना है तो आपको थ्योरम बेस पे करना पड़ेगा। टू प्रूव sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड देन प्रूव। ओके, प्रूव इन दिस in right triangle ABC by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, h square equal to p square plus b square, here h that is AC square and then p that is AB square and then base that is BC square, that is question number first। एक चीज बच्चों बहुत अच्छी चीज बताना चाहूँगा, इसलिए मैंने उसको हिंदी में तुम्हें पूरा एक्सप्लेन इसको कर रहा हूँ। बहुत जरूरी चीज बच्चों, मैंने आप लोगों को 3 आइडेंटिटीज बताई, इन तीनों की देखो बच्चों विशेषता क्या होती है। बहुत ये सो कंपल्सरी बच्चों एंड यू शुड नो इट। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, then sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। What is the relation between these? Come on, sin and cos। इनकी विशेषता जानते हो बच्चों क्या है? इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा 100%, P upon H, B upon H। cosec cot दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। कैसे? cosec बच्चों H upon P and cot B upon P, दोनों का क्या हुआ? परपेंडिकुलर P, then sec and tan, sec का बच्चों H upon B base and tan P upon B base। यानी एक रिलेशन आपने देखा कि हम कोई भी आइडेंटिटी लें इनका डिनोमिनेटर सेम है बच्चों। तो यहाँ हमारे पास है साइन और कॉस, और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो बच्चों योर रिलेशन इज गिवन एज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो यू नीड हियर डिनोमिनेटर एज hypotenuse means AC, since your relation is given in square, so you have to divide it by AC square। तो मैंने ये रीजन बता दिया कि AC का ही डिवाइड क्यों करते हैं, उसका रीजन मैंने बताया। अब बच्चों आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स by AC square, so you have got here AC square upon AC square equal to AB square upon AC square plus BC square upon AC square, cancel it, and then you have got AB upon AC square, then BC upon AC square equal to 1. Now look here, AB upon AC. Now look towards your diagram. AB, what is AB? That is perpendicular. What is AC? That is hypotenuse. Okay. Then BC, that is base upon hypotenuse. Now what do you mean by P upon H? That is sine theta square plus cos theta square equal to 1. Now sine square theta plus cos square theta equal to 1, and you have to prove it. Thanks बच्चों। कंप्लीट। और अब आप लोग करें